Okay, guys, we are live. How are you? I think we are meeting after probably 1 week time. So I hope you all had lots of fun in the previous sessions. And guys, I'm hearing an echo, so just please take care. Those who are the participant in this. So guys, so today we are here with a fantastic company. The company's name is Jyoti Global Plast. I already did a plant visit of the company on Monday, and we quickly got through the whole presentation and the video out for you. So in today's session, I'll not be taking a lot of time asking the same questions. I have Nikesh bhai with me who will be asking a lot questions, and I will play a part of a moderator. Yeah. So without further ado, I just want to run through the disclaimer to you guys. Yeah. So guys, Nikesh bhai and myself, we are not SEBI registered, analyst. We are individual investors. Though Nikesh bhai is with the Sovan. This particular platform is for you to interact with the promoter and interact with them, analyze the company, hear from them about their plan, what they have with the company. Yeah. So please do your own due diligence, and with that, we'll go live. Yeah. So all right. So guys, everybody. So meet Karan and Sayyam. So you already know me. My name is Chintan Parikh. I am your host today, and I have Nikesh bhai with me. Nikesh bhai, if you can just introduce yourself, please. So hello everyone, I'm Nikesh, an individual investor and also working with a financial firm which covers microcaps, and I'm I'm tracking SME from last 3 years, and now I would like to kind of start associated with Chintan Bhai for this promoter into. So yeah. Okay. So Sayyam, Karan, if you can introduce yourself, guys, and if you can take us through the deck, I'll just bring the deck as well. Yeah. Uh, Thank you so much, Chintan bhai, for having us here. A warm welcome to Nikesh bhai as well. I'm Karan Shah, the CFO of Jyoti Global Plast Limited. So me and my brother Sayyam Shah, we are the third generation in this family business. I'm a chartered accountant by qualification. Post clearing my CA, I worked for a couple of years in a defense and aerospace company of our country. After that, I have got my master's from USA. And since then, I've been working with Jyoti Global Plast from 2020 actually. So it's been more than 5 years now. Hello, hi everyone. Thank you, Mr. Chintan, for inviting us for this podcast live, and thank you, Mr. Nikesh, for joining this. My name is Tayyam Shah, and I'm the CMO of Jyoti Global Plast Limited. I have completed my MBA in marketing, and after completing my MBA, I worked with the company for 6 months, and then joined the family business. Okay. Perfect. I'll just bring the PPT on the stage. Yeah. Karan, yeah. Karan, Sayyam, please take it forward. Yeah. Yes. So we are Jyoti Global Plast Limited, and just before I start the presentation, I would like to give a one-line introduction of our company. We are proud to say that we have successfully begun our transition from a packaging company to a defense and aerospace company. Drone. So the raw material ranges from basic HDPE, HDPP to ABS to nylon and all the way up to FRP. Karan Bhai, So I would if like you to. can. Like how many different types of parts you make for the drones, and what is the smallest and biggest sizes? If you can, like that, give you idea about the parts that you are making. So how? सो हम यस निखिल तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो सो जो ड्रोन के पार्ट्स की साइजिंग डिपेंड होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंडेड एंड यूज ऑफ द फाइनल ड्रोन सो जैसे ड्रोन की कैपेसिटी होती है कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस की पैरामीटर्स होते हैं सो ड्रोन के साइजेस डिसाइड होते हैं बेसिकली सो हम ये जो भी पार्ट्स हम बनाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू तो जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग की कैपेबिलिटी है इज फ्रॉम 50 टन
all the way up to 450 tons. और कितने डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स बनाते हैं, लाइक कितने डिफरेंट वैरायटीज के पार्ट्स वी कैन से आप बना पाते हैं, लाइक सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दिस इज अ स्टैंडर्ड ड्रोन डिजाइन एंड इसमें मिनिमम 10 to 12 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लास्टिक एफआरपी के होते हैं. So depending upon the final design of the drone, each component का number decide होता है. For example, if it is a lighter drone, maybe आपको landing gear के लिए only 2 rods लगेंगे. If it is a heavier drone, maybe the number of rods required for landing goes up. So depending upon the drone की design and drawing, the final number of components go inside the drone. But different types of जो components होते हैं वो करीबन 10 to 12 we provide for each design. ठीक है. So आगे बढ़ते हुए ये हम दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स, सो हम ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. नीचे आप देख सकते हो आर द कनेक्टर्स दैट वी आर मेकिंग. सो अगेन द कनेक्टर्स दैट वी आर मेकिंग आर मेड आउट ऑफ एफआरपी एंड ये कनेक्टर का एंड यूज है इन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. दीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि एरोप्लेन्स हो गए, आपके मिसाइल्स हो गए, रॉकेट्स हो गए. So ये सारे connectors become a part of the electric are installed in such infrastructure. तो ये सारे products की molding की capability हमारे पास है and currently हम connectors already हमारे customer को provide कर रहे हैं. तो इसमें जो कॉपर कंपोनेंट्स है ये असेंबली आप करके दे रहे हो, ये असेंबली है वो यू आर डूइंग दैट कंप्लीट, यू मेकिंग दिस कंप्लीट पार्ट राइट सर इन कनेक्टर्स? नहीं, so currently we are doing the plastic and FRP components. ये जो पिक्चर्स आपके स्क्रीन पे है, these images are the end product जैसे अपीयर हो रहे हैं. So the assembly is done by हमारे customers जिनको हम हमारे plastic and FRP components provide कर रहे हैं. So Karan, shall we also talk about what exactly we are doing right now? Karan, by the way, you are on mute. So if you want, I can bring the slide back. Yes. So I'll just take you to the first initial slides. Yeah, about from. Feel free to I think we should. Yeah, maybe if we start with this one. Hello. Yeah. So I would like to say something. मैं थोड़ा अपने जो हमारा कोर बिजनेस है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा सारे ऑडियंस को. हमारा कोर बिजनेस इज इन HDPE एंड PP पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पहले, और अभी टॉयज का हमने उसके बाद चालू किया है. हम अभी लाइट वेट FRP कंपोनेंट्स फॉर ड्रोन्स बना रहे हैं, हाई क्वालिटी कनेक्टर्स बना रहे हैं जो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में यूज होएगा. हमारे पास हमारा खुद का ब्लो मोल्डिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स है, एंड वी हैव इन हाउस क्वालिटी लैब लेबलिंग है. फिर हमारे पास इन हाउस स्लीविंग है जो it is also supported by automated and conveyor systems around the plant. We have a very strong client base है, हमारा 1,000 plus clients active है at any point of time. We have our in-house quality lab. Then हमारे पास खुद के in-house 6 trucks है जो हम यूज करते हैं कि हम कस्टमर को टाइमली डिलीवरी दे सके और उसमें कोई डिले नहीं हो, विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देन मैं आपको थोड़ा हमारे लेगेसी के बारे में भी बताना चाहूंगा. ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1990 में बाय आवर ग्रैंडफादर मिस्टर भवानजी शाह. 1990 में एस्टेब्लिश हुई थी. फिर उस 1992 के आसपास मेरे फादर और करण जी के फादर ने ज्वाइन किया था तभी हमारा फैक्ट्री एस्टेब्लिश था मुंब्रा में. फिर 2003-2004 में हमने शिफ्ट किया रबाले में, जहाँ पे हमने हमारे कंपनी को रीब्रांड किया ज्योति पॉली कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड. 2003 से 2020 तक हमने पैकेजिंग पे फोकस किया एंड कंसिस्टेंटली हमने हमारा फुटहोल्ड इन पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ाया. 2020 में मैं और करण जी ने ज्वाइन किया बिजनेस, और
तभी हमने डिसाइड किया कलेक्टिवली कि हमको कोई और प्रोडक्ट देखना चाहिए वी शुड एक्सपांड आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो उसका सबसे पहला स्टेप हमने लिया कि 2022 में हमने कंपनी को रीब्रांड किया। उसका नाम क्या, ज्योति ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। बिकॉज पॉली कंटेनर्स में ऐसा था कि इट वाज अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव टर्म एंड ग्लोबल प्लास्ट वाज वेरी इंक्लूसिव, इट वाज एनेबलिंग अस टू डाइव इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दैट इज व्हाई हमने उसको रीब्रांड किया। और हमारा लीडरशिप इज कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर भवानजी शाह जो हमारे चेयरमैन है, मिस्टर हिरेन शाह जो मेरे फादर भी है, एमडी है वो, मिस्टर देवेन शाह करण जी के फादर और सीईओ है, मिस्टर करण शाह सीएफओ, और माई सेल्फ मिस्टर संयम शाह जो सीएमओ है। तो बेसिकली आपके क्लाइंट्स जो हैं, मैं देखा था कि 2 ही स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, महाराष्ट्र और गुजरात में, राइट? हाँ, हमारे मेजर कस्टमर्स और क्लाइंट्स जो है महाराष्ट्र गुजरात में है। अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द क्लाइंट्स महाराष्ट्र और गुजरात में, बिकॉज पैकेजिंग ऐसा प्रोडक्ट है कि हमको कस्टमर के पास होना पड़ता है। तो बेसिकली आपके क्या बोलिए? नहीं, तो संयम भाई, अगर थोड़ा सा हमें जो हमारे बाकी के पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स जो सॉल्यूशन के हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास पैकेजिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम अ बॉटल ऑफ 250 ml गोइंग अप टू 250 लीटर है। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर को जो भी सारे प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट हो हमारे पास हो। तो हम लोग मेजरली ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं, जिसमें अगर पैकेजिंग रेंज की बात करें तो उसमें 3 टाइप के पैकेजिंग होते हैं। जनरल ब्लो मोल्डिंग जो 250 ml से 5 लीटर तक होता है, मीडियम पैकेजिंग जो 5 लीटर से 120 लीटर तक होता है, और लार्ज ब्लो मोल्डिंग जो 200 लीटर प्लस होता है। तो ये हमारा मेजर पैकेजिंग डिवीजन है। और हमने रिसेंटली पेल बकेट भी चालू किया है टू केटर टू द पेंट इंडस्ट्री। करण भाई, ये बेसिकली एक प्राइम टेक्नोप्लास्ट करके एक मेन बॉडी कंपनी है, दैट्स आल्सो यू कंसीडर देम एज अ पीयर, राइट? और कंपटीटर? यस। तो उनका एक जैसे उनके इसी में उनके जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्लेट, उनके सीएनजी टैंक्स हैं। तो लाइक the only difference is that I see from the product profile that you don't like, so any reason you're not making CNG tanks and all those stuff, so hydrogen tanks? So जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, टाइम टेक्नोप्लास्ट इज आवर पेयर, बट इट इज आवर पेयर फॉर द पैकेजिंग सेक्टर जो हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बिजनेस रहा है। बट जो हम नए बिजनेस में एक्सपांड एंट्री की हमने डिफेंस एंड एरोस्पेस में, so we don't have any listed peer who is doing a mix of packaging and defense and aerospace products as well. So हमारा जो फोकस रहा है was to expand into defense and aerospace, hence हमने वो फील्ड के प्रोडक्ट्स चूज किए। Okay. So Sanyam, I've brought this slide with all the products that we have. Yeah, so we can also tell us about some of the customers who are using these products, whichever you can name. Yeah, we don't want to ask for something which is not yet published in RHP, but whatever you can say, who are your major customers for each of this. What I can say, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कौन से मेजर इंडस्ट्रीज है जो यूज करते हैं ये प्रोडक्ट्स। सबसे मेजर इंडस्ट्री है केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स, जिनको जो नैरो माउथ आप देख रहे हैं या वाइड माउथ देख रहे हैं वो उनको प्रोडक्ट्स लगते हैं, क्योंकि दे हैव टू ट्रांसपोर्ट केमिकल और स्टोरेज केमिकल। फिर दूसरे जो केमिकल के पार्ट्स होते हैं जैसा जो पाउडर केमिकल्स होते हैं उनको जैसे फुल ओपन टॉप ड्रम्स लगते हैं। देन हमारा दूसरा मेजर सेगमेंट इज लुब्रिकेंट ऑयल्स, जिसको मेजरली आप बोलेंगे तो स्मॉल पैकेजिंग लगता है 5 लीटर एंड बिलो, जिसमें हमने रिसेंटली काफी एक्सपांड किया है बिकॉज लुब्रिकेंट का आजकल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच इज व्हाट वी सीन। फिर आप दूसरी जगह देखेंगे तो हमने ऑटो पार्ट्स, पेल बकेट्स और टॉयज एंड किड फर्नीचर चालू किया है। तो पेल बकेट्स मेजरली हम पेंट इंडस्ट्री में भी करंटली सप्लाई कर रहे हैं, ऑटो पार्ट्स अभी हम टियर 2 OEMs को दे रहे हैं, एंड टॉयज एंड किड फर्नीचर टियर 1 OEMs को दे रहे हैं। जो ये पेल बकेट्स है, you also cater to paint industry or Yes, majorly we've started with the paint industry, then we've expanded into the grease industry also. तो दोनों इंडस्ट्री को हम केटर कर रहे हैं करंटली।
तो इनमें आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट सेगमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा सेल होने वाला सेगमेंट कौन सा है? तो अगर इफ वी टॉक ओनली अबाउट द पैकेजिंग रेंज, तो लार्ज ब्लो मोल्डिंग जैसे मैंने बोला 200 प्लस इज वन सेक्टर, अराउंड 41% हमारा सेल वो वहां से आता है। और आप स्मॉल पैकेजिंग और मीडियम पैकेजिंग को पकड़ लो, उसका एडिशनल इज 45%। सो दोस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। Okay. Okay. So So, is guys, yeah. so what I was thinking was if we can talk about the factory and we can also play the video of the factory afterwards. Yeah. So I'll just bring the factory slides. Yeah. So yeah. तो करंटली हमारे दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नवी मुंबई में। तो एक दोनों आसपास में ही है, तो हमने उसको कैसे डिवाइड किया है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 जो है वहाँ पे हम 250 ml से 120 लीटर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 जो है हम लोग वहाँ पे लार्ज ब्लो मोल्डिंग करते हैं जो 200 प्लस लीटर के बैरल्स है। तो वो हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाता है टू हैंडल द प्रोडक्ट। एंड आवर कंबाइंड कैपेसिटी इज करंटली अप्रोक्सीमेटली 7,500 मेट्रिक टन्स पर एनम। Okay. So with this, I think I will just run the video of your factory and your corporate video. I'll just bring that up here.
Yeah, Karan, over to you. Karan, over to you. Am I audible? यस यस थैंक यू चिंतन भाई वीडियो चलाने के लिए सो जैसे कि आप जिस्ट देख सकते हो हमारी कंपनी का इनिशियली हम ब्लो मोल्डिंग कर रहे थे सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने एक्सपांड किया है इन इंजेक्शन मोल्डिंग एज वेल हमने इंजेक्शन मोल्डिंग की शुरुआत की थी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से एंड जो हमारा लेटेस्ट एडिशन रहा है जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन की स्टार्ट में बताया था is that we have forayed into the defense and aerospace sector. हम डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए FRP मोल्डिंग कर रहे हैं एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस इज द सेक्टर फ्रॉम विच द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर ग्रोथ एंड नेक्स्ट फेज ऑफ आवर जर्नी इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड. तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जो हमारे की हाइलाइट्स है आईपीओ के. So one of them being our expansion into the defense and aerospace sector. सेकेंड हम हमारे आईपीओ प्रोसीड से महाड़ एरिया जो है विच इज 3 आवर ड्राइव फ्रॉम नवी मुंबई वहाँ हमारा लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी परचेज द लैंड एंड बेसिक काम उस लैंड पे शुरू हो चुका है. विथ आईपीओ मनी हम उस पर फुल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे. So we'll be ready to grow and expand as and when the need arises. Second जो हमारा यूटिलाइजेशन रहने वाला है ऑफ द आईपीओ प्रोसीड इज गोइंग टू बी सेटिंग अप अ सोलर पावर प्लांट. सो मोल्डिंग के बिजनेस में जो सेकेंड हाईएस्ट कॉस्ट ड्राइवर है आफ्टर द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो टू ऑफसेट दैट हम हमारा खुद का सोलर पावर प्लांट डालने जा रहे हैं. द सोलर पावर प्लांट विल बी सेट अप इन नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के and it will work on the net metering concept. तो सोलर पार्क डालने से दो एडवांटेजेस होंगे. वन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा बॉटम लाइन्स विल इम्प्रूव एंड सेकेंड इज इट विल बी अवर स्मॉल कंट्रीब्यूशन फॉर द एनवायरनमेंट. सो दीज आर द टू मेन रीजंस जिसकी वजह से हम आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं वेयर द आईपीओ प्रोसीज आर गोइंग टू बी यूज्ड. तो जैसे कि आप ये एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये बेसिकली किन प्रोडक्ट सेगमेंट्स के लिए आप ये न्यू फैसिलिटी लगा रहे हैं? सो जो हमारा नया प्लांट है इज स्प्रेड अक्रॉस 4 acres. सो जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव जो हमारे करंट प्लांट्स है उसका कंबाइंड एरिया इज 1 acre. सो महाड़ प्लांट में हम फर्स्ट फेज में वी आर गोइंग टू बी डेवलपिंग 1 acre. And since it's such a big plant, it will be structured and divided internally. And हम सारे product offerings provide करेंगे from this plant. Okay. Next one. Yep. Yes, Chintan bhai, so if we can move to the numbers and talk about our numbers then. Sure. So yeah, we can start with financial snapshot and then we'll go into the bifurcation. So जैसे कि आप देख सकते हो हमारे numbers are pretty robust. जो हमारा लास्ट ईयर का टॉप लाइन था वो इज 93.5 crores का. हमारा पैट रहा है 6.8 crores का. एंड जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट 2 years से वी बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग बोथ एबिटा लेवल एंड एट पैट लेवल्स. ये हमारा ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू रहा है. जैसे संयम वाज एक्सप्लेनिंग सम टाइम बैक. सो दीज आर द फ्यू इंडस्ट्रीज जिसको हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एंड जो हमारे टॉप रेवेन्यू प्रोवाइडर्स है. सो द टॉप वन बीइंग केमिकल सेगमेंट, द सेकंड बीइंग लुब्रिकेंट्स, द थर्ड बीइंग ऑक्साइड्स एंड देन फूड कलर. बट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वी आर सप्लाइंग करेंटली टू मोर देन 10 plus segments and under each segments there are multiple customers. So हमारा जो customer number है for any year is more than 1,000 plus live customers.
out of which 400 are repeat customers. So we have a pretty solid customer base without over reliance on a single customer, I would say. So, Karan, This is if you can our also explain the reason geographical here. bifurcation. Yes, If you can explain the reason yes, sir. why Maharashtra So has the जैसे कि आप 95%. स्क्रीन करण भाई आपका महाराष्ट्र सो जो में सबसे हमारा ज्यादा कौन सा ट्रेडिशनल बोलिए बोलिए इको हो रहा था थोड़ा यस सर सो जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है पैकेजिंग का फॉर दैट बिजनेस लॉजिस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉस्ट फैक्टर जो हमारे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली हॉलो है वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस है सो ट्रांसपोर्टिंग देम ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज इज वेरी एक्सपेंसिव सो बेसिकली इन द पैकेजिंग बिजनेस आपको कस्टमर्स के करीब होना पड़ता है since our manufacturing plants are situated in Maharashtra, so that is where our majority of the revenue comes from. ये आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का इंटरनल ब्रेकअप है इन टर्म्स ऑफ वी हैव डिवाइडेड बोथ इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एज वेल एज द टाइप ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स तो जैसे संयम वाज एक्सप्लेनिंग जो हमारा जनरल ब्लो मोल्डिंग है फ्रॉम 20 लीटर टू 120 लीटर दैट इज आवर टॉप रेवेन्यू प्रोवाइडर दैट अकाउंट्स फॉर रफली 45%. उसके बाद जो सेकंड है इज आवर बैरल्स सो बैरल्स की हमारी कैपेसिटी है राइट फ्रॉम 200 लीटर अप टू 250 लीटर्स सो दैट इज आवर सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू प्रोवाइडर एंड देन थर्ड इज आवर स्मॉल पैकेजिंग सो इन स्मॉल पैकेजिंग वी डू अप टू 10 लीटर्स वो हमको ऑलमोस्ट 8 to 9% रेवेन्यू प्रोवाइड करता है. But when it comes to the margins, so the margins are inversely proportional to the size. So जैसे जैसे आप size packaging product की कम करते हो वैसे margin contribution increases. So, Karan, I have few questions which came from audience. I would like to take them. You should be able to see those questions on the screen. Yeah. So, first question is from Shriya. She asked, "What is the go-to-market strategy for entering completely new segment like defense and aerospace?" It's a great question, and everybody would love to understand this. कि plastic packaging में इतनी सारी कमियां हैं. How come you guys suddenly moved into the new segment? Okay. So इसके multiple reasons हैं. So one of them being as I was sharing my experience with the viewers, I have an experience in the defense and aerospace background. So मैंने couple of years I have worked in that sector. तो मेरे जो networks थे, connections थे, learnings मैंने जो वहाँ से सीखा है, that is helping me today to get entry or foray into this sector. So that is one of the reason. Second is we've been in the molding industry for more than 30 years now. So I would say we have exported the art of fine molding or जो precision molding चाहिए. So we are building on our expertise from that and entering this segment so that we are able to provide quality services and जो customers basically ये field में desire करते हैं तो we are able to match their standards. Third, we have a very stringent quality and R&D process and team in-house. So only once our products are passing through all the checks is it when we supply to the end customers. So we have a pretty robust testing and checking infrastructure. एंड लेटेस्ट हमने स्पेशली मशीनरी इंपोर्ट की है फॉर दिस सेक्टर which can provide us with the precision which is required in such critical components. So these are our few strategies or few differentiating factors which have helped us enter the defense and aerospace sector and which will help us grow further in this sector. Okay, the next question I want to take is from Sparsh. Unfortunately, I will not be able to comment on the revenue numbers, but our next phase of growth is going to come from the defense and aerospace sector.
Karan, we mentioned in the RHP about our order book on the defense as well as the automobile side, right? So if you can also talk about the whatever is mentioned in the RHP, yeah, that should help to answer first number, and also the time Yes. duration as well. So to answer this question, though I cannot comment on the targeted revenue, but we have a firm order book of over 20 crores as on date from the defense and aerospace sector. And the time duration for execution of this orders is 18 to 24 months. तो ये जो आप डिफेंस के लिए कंपोनेंट्स बना रहे हैं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ता है, or do you have this? Nikesh bhai, we have a slide coming up on this, so we'll pass this question and then we can take it up Okay. when that slide comes. Yeah. Karan, I think we have covered all the other slides. So if you can talk about the promoter team, yeah, and then we'll go into the certification part and the quality check part. So as you can see on the screen, there are 5 promoters in the company. The company जो शुरुआत की थी was my grandfather, Mr. Bhavanji Shah. So he is still our mentor and our guide. The second generation in the business is my uncle, Mr. Hiren Shah, and Mr. Deven Shah, my father. So Mr. Hiren Shah is the managing director. He primarily looks after the finance and accounting aspect of our business. Mr. Deven Shah is the chief executive officer and whole-time director. He is responsible for operations and new product development and newer markets that we enter into. Karan Shah, I am the chief financial officer, and Sayam Shah is the chief marketing officer. So both of us constitute the third generation in business. So I am responsible for looking after our entry into the defense and aerospace sector, as well as driving the entire IPO process. Sayam Shah looks after the sales and marketing area and the sales and marketing strategies for our company. Nikesh sir, to address your question, जो आपने quality certifications के बारे में पूछा था, since we are supplying components, we are not making any final products. We don't have any specific approvals or government licenses required. But since we are in the business of plastic and FRP molding, there are few certifications that we have to comply with. So one of them being ISO. So we are ISO 9001 certified and updated till date. दूसरा, we are UN compliant. So UN compliant का relevance is that our products are safe for transportation and logistics. The third and most important being EPR. So EPR का full form है Extended Producer Responsibility. ये government ने apply किया है on all plastic manufacturers and processors. So we are proud to say that we are EPR compliant also, and हमारी सारी liabilities offset हो चुकी है till date. So this is from requirement point of view. But in addition to that, मैं add करना चाहूँगा, internally we have a very stringent quality testing process. We have in-house laboratory with a dedicated quality team. So because of our certification plus our in-house strength, we were able to crack customers in the defense and aerospace sector. Because उनके audit requirements and norms are very stringent, very strict. So for us to be able to fulfill that and get empaneled with them was a testament of our quality and certification. Karan, just wanted to ask, one more question here. So basically, for a drone manufacturer, they need a DGCA certification, right? Type certification. So Yes. Are there any such plans in future which you would like to, let's say, go for it? Or do you want to stay into the, lane of a part manufacturer only and not in the drone manufacturing later on? So eventually we want to move towards the assembly phase as well. And as we start our journey in that direction, whatever relevant certificates are required, we will be applying for those and
and we'll get those to manufacture the final product required. करण भाई, सिविल नॉन मिलिट्री ड्रोन्स हैं, उसके लिए आपका कुछ लाइक या Sorry, if you could repeat your question. आपका voice break हो गया. like civil नॉन मिलिट्री ड्रोन्स है, जो ड्रोन्स दैट वी यूज फॉर जनरल पर्पसेस, राइट? जैसे एग्रीकल्चर आपने बात किया, एग्रीकल्चर ड्रोन्स हो गए, तो उसके लिए आपका कुछ स्ट्रेटजी है कि यू ओनली वांट टू कैटर टू द डिफेंस ड्रोन, लाइक So जो हमारे existing customers है in the defense and aerospace sector, mainly the aerospace sector for drones, so they are catering to all kinds of drones. They are making agri drones, logistic drones, surveillance drone and military drones. So हम जो components provide कर रहे हैं वो ये सारे category के drones में use होते हैं. So we are not restricting ourselves to one particular type of end product. Our products or our components can be used across the spectrum. Okay. So जैसे कि आप earlier I was talking about हमारा consistent growth रहा है year on year. आप हम screen पे भी देख सकते हो, our PAT margins have grown in the last 3 years. So I would like to comment on our growth numbers. Basically जो इसके few reasons रहे हैं why we've been able to achieve this growth. So one of them, though our top line numbers have remained flattish, हमारा volume growth रहा है year on year. So the growth in volume has contributed to the bottom line. Second, जो हमारा product mix रहा है, हमने हमारा product mix को change किया है. We have focused more and added more products in the small packaging, which is less than 10 liters. So small packaging में margins are higher as compared to other products. Also जो हमने small packaging range add किया है, उसमें we are providing value added service. Some of the value added services that we are providing is stickering, sleeving, automatic testing. So ये services के कारण हम हमारे जो final customer हैं उनसे हम premium charge कर पा रहे हैं. Also, as Sayam was mentioning, हमने pale buckets introduced किया in the market. So the pale buckets have a higher margin as compared to other products. So these are few of the reasons जिसके वजह से हमारा bottom line consistently grow हुआ है year on year. करण भाई, जैसे मैं देख रहा था कि आपके जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट डिक्रीज हुई है इन लास्ट 3 फाइनेंशियल इयर्स, तो लाइक व्हाट वाज द रीजन, हाउ यू मैनेज टू reduce and any plan to reduce further in future? So one was जो एक major reason था for reduction in the raw material price was that market में there is one more new supplier of raw material. So because of the advent of new supplier, all the existing suppliers as well as the new suppliers have been providing consistent discount to us. So we've been able to get better raw material pricing, जिसकी वजह से the overall cost has gone down. एंड दिस रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल जो क्लाइंट्स जो आपके वो हैं, कंपनी जो सप्लाई करती है, आर दे इंडियन बेस्ड और आउटसाइड बेस्ड? So it is a mix of both. So for हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसके लिए हम लोकली सोर्स करते हैं. For our latest offering जो डिफेंस एंड एरोस्पेस के प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, so few of the raw material grades such as FRP जो है वो हमें import करना पड़ता है. Okay, yeah. I want to ask that. So this is a very special grade of material, right, for drones that you're using? Not just for drones, but for all the products in the defense and aerospace segments. Okay. Karan, yeah, next slide. Yes. So जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, this is a comparison with our
peers in the packaging sector जो हमारा traditional business रहा है उसके ये peers है and our numbers are better than most of our peers on majority of the aspect. So इसके few reasons है which give us a competitive strength and जो मैं elaborate करना चाहूँगा. One is our extensive experience in this field. So हम पैकेजिंग सेक्टर एंड मोल्डिंग सेक्टर में मोर देन 30 years से रहे हैं. So we have built on our base, I would say, जो हमारे systems है, processes है, are pretty robust. Second is जो हमारी promoter and management team रही है. So this is third generation in the business now. So we have a set base जिसको use करके हम grow and expand कर रहे हैं. Third is our importance and focus on the quality checks and standards. In addition to that, हम जो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जैसे स्टिकरिंग हो गया, स्लीविंग हो गया, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग फैसिलिटीज हो गई. In addition to that, we have a fleet of our own trucks as well. So by doing that, we are reducing the lead time to the customer and are able to service them in a quicker and efficient manner. So these are few of the points which are giving us a competitive advantage in the market and improving our performance continuously year on year. सो लास्ट स्लाइड वाज आवर कंपैरिजन विद द peers. जैसे कि ये स्लाइड में आप देख सकते हो, नॉट जस्ट in comparison to others, but in comparison to our past performance also, we are improving and growing year on year. इसमें only one thing that I would like to point out is that though our जो 23 से 24 में आप देखोगे, there is a dip in the top line number, and from 24 to 25 the top line has remained relatively flattish. So इसका मेन रीजन वाज जो हमारा इंडस्ट्री का प्राइसिंग नॉर्म्स है आर ड्रिवन बाय द रॉ मटेरियल प्राइस. So since the last couple of years, raw material prices are on the downtrend, जिसकी वजह से हमारे final product की pricing भी कम रही है. But if you look at our volume numbers, we have consistently grown year on year in terms of our volume numbers. So this is one highlight जो मेरे को viewers को बताना था. And our bottom lines have grown continuously. This is a snapshot of our financial statements. Karan, if you can talk about the your debt, both the long term as well as short term, yeah. So we have a mix of long and short term debt. Short term debt हमारी mainly working capital facility है, which we've taken from bank. So we have a working capital facility to the tune of 20 crores. So in our industry, in the molding industry, जो average working capital cycle है वो 90 days का रहता है. So to fund that cycle, we need to utilize short-term borrowings from the bank. In terms of long term borrowing, हमारी एक टर्म लोन है 1.2 करोड़ की सिडबी से. So we are proposing to repay that term loan from our IPO proceeds. So we have a question from Majid here. I want to take it. And if I remember correctly, Majid is from a very good family office. He's an analyst there. Yeah? Yes, so Majid is asking about the working capital days. So जो हमारे customers हैं defense and aerospace के, so all of them are either private companies or MNCs or subsidiaries of MNCs. So our payment terms with them are on the same lines as our existing customers. So getting into the defense and aerospace business will not impact our current working capital cycle. Perfect. Yes. Perfect. So, guys, just to tell you that this particular IPO is being brought to the market by Unistone. The IR is with Orim Connect.
if you can just talk about the IPO fund usage. Yeah, I'll just bring the relevant slide. I think it is on the beginning, right? Yes. Yeah. Um, so our IPO size is going to be of 35.44 crores. So we have an OFS component and a fresh issue component. So I would like to clarify that currently there are no personal debts in the company in the name of the promoters, no housing or vehicle loans. So to meet our financial obligations, there is a little OFS component, and also after the OFS, our stake in the company will still remain at 73%. So we'll have sufficient skin in the game to grow the company and prosper further. Coming to the fresh issue component, our major expense of 11 crore is being directed towards setting up our Mahad facility. The second fund use of 9 crores is going to be towards setting up of solar power plant. And the third component, we have a small repayment of 1.2 crore of SIDB loan. So this is our brief utilization of the IPO money. So, guys, if you have any questions, please go into a different. Okay. We have one question from Ayushji. It is about do we foresee any export, as a part of your growth roadmap? So currently, since we our traditional back business has a restriction because of logistics cost, हम currently export नहीं कर पा रहे. But जो हमारे newer segments and newer products in the defense aerospace है, so उनमें logistics is not an important cost element. So then there will be no restriction in terms of geographical coverage for those products. Okay. Right. Nikesh bhai, any questions from your side? Please go ahead. So I think right now nothing. Yeah. Perfect. So, guys, I think we don't have any more questions as well. So, Karan, over to you if you wanna, give a message. Both Sanyam, Karan, if you wanna, give any message to your prospective investors. We have close to 800 plus live audience right now. So, Uh, over to you. So first of all, thank you everyone for joining in and taking the time out to listen to our presentation and be a part of our talk. So I would just like to leave everyone एक parting message के साथ सबको छोड़ना चाहूँगा that हमारी company over 35 years old है. So इसका base already हमारे first और second generation ने set कर दिया था. Now, since the past 5 years, the third generation is actively working in the business with the sole goal that ये base को हम कैसे use करके we can grow and expand further. And we are very proud and happy ये बोलने के लिए कि we have successfully started our transition from a packaging company to a defense and aerospace company. Okay. So, guys, I just want to thank, first of all, Nikesh bhai for being here. Karan, Sayyam, thank you for being here. Wish you all the best. And those Thank you guys so who are much. listening, guys, please do follow Nikesh bhai and myself. We are there on Twitter. And please share this channel to your circle, to your WhatsApp group. It will give us a lot of love and encouragement to bring such a more and more content to you. Yeah. I just want to leave you with just a disclaimer once again, guys. Again, please make your own decision. We may or may not apply to the IPO. There is no guarantee that you may there will be listing gains or you make profit in this. You have to use your own analysis. This is the platform, so you get a chance to do that. Yeah. So please use discretion while applying. Right? And with that, I just want to leave you guys. Thanks a lot for joining us, and we'll see you in the next live session. Everyone, bye bye. Bye bye.